Welcome, my friends. We are going to see in this lecture about Newton's law of motion. This is second lecture on Newton's law of motion, and which deals with the first law and derivation of first law from the second law. Show that first law is nothing but the special case of second law, and later we will see the limitations of Newton's law of motion. All right. So this is basically content of the chapter. So in this lecture, as I said, we are going to see Newton's law of motion, derivation of Newton's first law of motion from the second law of motion, then limitations of Newton's law of motion. All right. So we'll start with Newton's first law of motion from the second law of motion and show that first law of motion is nothing but the special case of Newton's second law of motion. All right. So we know that Newton's second law of motion states that force can be measured in terms of rate of change of momentum per unit time. What did I say? I said that कि force कैसे मेजर कर सकते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा हाउ कैन यू राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स सो वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू dp by dt where p is nothing but momentum and momentum is nothing but mass into velocity. Momentum is nothing but mass into velocity of object. So just put the value of p in the equation. We get f is equal to d mv by dt. So far in this situation we have taken mass as a constant term. What we assume mass as a constant term. So you know that mathematically we can take that mass out of the differentiation and we get the formula f is equal to m into dv by dt. What we get? F is equal to m into dv by dt. And we end up with f is equal to ma. We end up with f is equal to ma. Means f is nothing but force, m is nothing but mass, and a is nothing but acceleration. We know that acceleration can be defined as dv by dt, rate of change of velocity per unit time. Alright, so we have this equation f is equal to ma, which refer that if net force is acting on the system is 0, then automatically your acceleration become 0. Then automatically your acceleration becomes 0. So you can say that if no external force acts on a system, no change in velocity and no acceleration. That is your nothing but first law of motion, Newton's first law of motion. So no change in velocity is nothing but if there is a no external force, no change in acceleration, acceleration is 0. That means your velocity is either constant or 0. That is nothing but your first law of motion. Alright. So Newton's first law of motion is, this proves that Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. What did I say? Newton's first law of motion is nothing but the special case of Newton's second law of motion. Alright. So now we will see the limitations of Newton's law of motion. So we will start with some example. Look at this diagram. So you know that this rocket, what is the beauty of rocket? You can see the mass is continuously changing. One more time we can see this. So give it a second to see this. This one is like whole body. One portion got detached, second portion got detached, third portion got detached, and at last everything is got detached and the astronaut will be in space. So in this situation, while your spaceship or satellite launching situation, your mass is not constant. So, and you know that in Newton's law of motion, we considered mass is a constant term. What we considered? Mass is a constant term. But unfortunately, there are systems where mass is not a constant. What is it? ऐसे भी systems है जहाँ पे mass constant नहीं है. तो ऐसे situation में जहाँ पे mass continuously vary हो रहा, तो आपका Newton's law भी क्या होगा? Hold नहीं होगा. Newton's law of motion भी
अच्छे से होल्ड नहीं होगा। इसका डेरिवेशन इक्वेशन जब अपन रॉकेट का एग्जांपल देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे। उसके बाद और रॉकेट लूजेस एज आई सेड पार्ट्स एज इट मूव्स अप डायरेक्शन। इसका मतलब भी क्या है, उसका मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसका मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। वैसे फॉलिंग रेन ड्रॉप जो ऊपर से नीचे नीचे गिरता है, इट स्टार्टेड गैदरिंग मास एज इट फॉल्स, एंड उसका मास कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा तो अपन उसका अगेन सेकंड लॉ आपका क्या हो रहा, अगेन सेकंड लॉ क्या हो रहा आपका, स्पॉइल हो रहा या वायलेट हो रहा, वैलिड नहीं है उस सिचुएशन में, तो आपका वो भी फेल हो गया। देन if you consider relativistic mass atoms like electron, photon, proton, any tiny particle, उसमें अपन relativistic mass लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, m that is equal to m0 rest mass divided by 1 minus v square by c square। m that is relativistic mass, m0 rest mass divided by 1 minus v square by c square। v क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, v क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। यहाँ पे भी अगर आप देखते तो आपका जो मास है वो कंटिन्यूअसली वैरी हो रहा विथ वेलोसिटी। व्हाट डिड आई से, योर मास इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ वेलोसिटी। यहाँ पे भी आपका मास वैरी हो रहा, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा। और अपन सेकंड लॉ के हिसाब से क्या लिखते हैं, डी एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज नथिंग बट एफ इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी, पी इज नथिंग बट एम इंटू वी। उस समय अपन ने क्या लिया था, मोमेंट मास को कांस्टेंट लेके बाहर लिया था। लेकिन ये जो तीन एग्जांपल्स देखे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपन ने तीन देखे, रॉकेट का, फॉलिंग ड्रॉप का और रिलेटिविस्टिक मास का, यहाँ से क्या प्रूव हो रहा कि आपका जो मास है वो कांस्टेंट नहीं है। मास कांस्टेंट नहीं तो आपका फंडामेंटल जो एजम्पशन है वही वैलिड नहीं है, और फंडामेंटल एजम्पशन वैलिड नहीं है तो आपके बाकी चीजें भी कुछ वैलिड नहीं रहेंगी। ऑलराइट, तो सिमिलरली वी कैन सी द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो है लिमिटेशंस, वो देखते जो अपन ने अभी पहले देखे थे, उसमें कौन सा था, मास कांस्टेंट नहीं है। तो वैसे इसमें अगर आप इसमें थर्ड लॉ देखोगे तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हाट वी टीचर्स कि वी कैन एक्सट्रापोलेट द यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ टू पार्टिकल मूविंग स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। जब भी आपका जो स्पीड है, ऐसे पार्टिकल है कि जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, या फिर जैसे स्पीड ऑफ लाइट से ऑलमोस्ट क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे आपके न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, वहाँ पे आपके न्यूटन्स लॉ वो वैलिड नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों भी साथ साथ में जाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी भी देगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा, तो वो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, थर्ड लॉ के हिसाब से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस हो गया, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होता है फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों है, वो न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन नहीं करता। अगेन अनदर कॉन्सेप्ट इज सूडो फोर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, सूडो फोर्स। आप चल रहे हो, चलते चलते गाड़ी टर्न हुई, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो सूडो फोर्स हुआ। वो क्यों हो रहा, किसके वजह से हो रहा, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन न्यूटन्स का थ्योरी नहीं कर पाता। सो बेसिकली दिस आर फ्यू limitations of third law of motion. So if you have any queries, as I said, don't hesitate to contact me. So far this is okay, I guess, for this video. In next video we will see derivation of conservation of linear momentum using Newton's law of motion. Alright, but for now I think that's it for this video. Thank you very much.